Good morning, dear students. In the last two classes, we discussed about the atom, atomic structure, and other things. So I'll continue today with the problems of atomic structure. That what kind of problems will be there in the atomic structure. Number one is we must know about the spectral series analysis, and this will be always on the first priority, that what we have is the spectral series analysis. There are two formulas to calculate wavelength. First one, whenever any transition will be there, E2 minus E1, it is always HC or always HC by lambda. So when we have lambda, we can write HC upon E2 minus E1. This is the first formula to calculate wavelength. The second one is, of course, the Rydberg formula, where you calculate 1 upon lambda equals to RH 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. अब जो भी प्रायोरिटी हमें दे रखी हो, अगर हमें एनर्जी की टर्म में दे रखा हो तो हम फॉर्मूला नंबर 1 ले लेंगे, और अगर हमारे को दे रखा है ट्रांजिशन की टर्म के अंदर तो हम लैम्ब्डा n की टर्म ले लेंगे. जैसे मुझे डायरेक्ट अगर एनर्जी की टर्म के अंदर दे रखा है, योर E2 इज minus 3.4 electron volt, E1 is also given as minus of 13.6 electron volt. I prefer this formula because यहाँ HC is always a constant value. I am sure we have already discussed this must be equals to 12400 divided by, हमेशा ध्यान रखना माइनस है, so 3.4 minus 13.6. इससे हमारे पास में लैम्ब्डा की वैल्यू आ जाएगी 12400 अपॉन 13.6 प्लस का हो गया, तो 13.6 में से 3.4 गया, you can write 13.6 minus 3.4, so it's around 1.2 के आसपास, 12.21 के आसपास. और इसको जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 13.6 माइनस 3.4 प्लस 13.6. ये वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, किसी हालत के अंदर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना. वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं आता. अब इस तरह के ट्रांजिशन जब आ रहे हैं हमारे पास, यहां पर आपको कहा है एक इलेक्ट्रॉन है, it will jump from N2 equals to 3 to N1 equals to 1. इस सिचुएशन के अंदर you always prefer this formula 1 upon lambda RH 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square. So 1 upon lambda becomes RH 1 minus 1 upon 9. इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा, it becomes 8 by 9. और लास्ट में आप लैम्ब्डा की वैल्यू को लिख सकते हैं. चाहे आप इस तरह से कैलकुलेट करें, चाहे आप इस तरह से कैलकुलेट करें, अगर आपके पास में डेटा बिल्कुल परफेक्ट है तो बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आपके पास में लैम्ब्डा की आ जाएगी. वेवलेंथ निकालना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन यू विल कैलकुलेट वेवलेंथ. कंसेप्ट नंबर 1, ईदर फ्रॉम द थर्ड पोस्टुलेट और फ्रॉम द रिडबर्ग फॉर्मूला. RH की वैल्यू 1.097 10⁻⁷ पर मीटर के अंदर है. ये कांस्टेंट है, आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट 10⁻⁷ भी रख सकते हैं इसको, जिससे आपको आसान रहे कैलकुलेशन करना. तो यू कैन डायरेक्टली पुट 10⁻⁷ आल्सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एटम, हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब देखते हैं दूसरी तरह की प्रॉब्लम. एटम के जो 5 मार्क्स हैं आपके बोर्ड में, वो मार्क्स कटने नहीं चाहिए, आसान है, बिल्कुल आराम से हो भी जाएंगे. सेकंड कंसेप्ट देखिएगा. ये दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपसे कहा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ग्राउंड स्टेट.
अब जैसे ही आप लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फिलहाल इसकी एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको मैं फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल सकता हूं और ग्राउंड स्टेट भी बोल सकता हूं। ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज -13.6, गिवन नहीं होगा तो अपने को ध्यान में रखना है कि ग्राउंड स्टेट इसका मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। अब देखिए आप इसके ऊपर एक फोटोन गिरा रहे हो, हियर वी हैव फोटोन। इस फोटोन की एनर्जी है बाय द वे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से मिलेगा हमारा टोटल एनर्जी हो जाएगा पहले ग्राउंड स्टेट का एनर्जी और फिर एनर्जी ऑफ फोटोन -13.6 प्लस 12.1। इससे हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये एक्साइट होगा, एक्साइट होकर ये कौन सी ऑर्बिट में जाता है वो मुझे चेक करना है कि कौन सी ऑर्बिट में ये चला जाएगा। इससे मेरे पास में इसका फॉर्मूला है, एनर्जी इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर। एनर्जी क्योंकि माइनस में आ रही है, माइनस माइनस कट गया। फिर अगर मैं n को इक्वेट करता हूं सो n स्क्वायर इज 13.6 अपॉन 1.5, ये आता है 9 के आसपास। इसका मतलब n मस्ट बी इक्वल्स टू 3। अगर n 3 आ जाए व्हाट विल हैपन, ये देखिएगा n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। इलेक्ट्रॉन ने यहां से जंप किया, कहां पहुंच गया, थर्ड में पहुंच गया। हाउ मेनी वेवलेंथ विल बी रेडिएटेड, देखिएगा इसके ट्रांजिशन क्या क्या हो सकते हैं। n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1 में आए, अगर आप इसको नाम दे दो λ1, सो λ1 रेडिएशन विल बी देयर। n equals to 3 to n equals to 2, λ2, और n equals to 2 to n equals to 1, this is λ3। थ्री रेडिएशंस आएंगे। मेरे पास में रिडबर्ग फॉर्मूला है, उस रिडबर्ग फॉर्मूला से मैं λ1, λ2, λ3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर, अगेन फ्रॉम NCERT अनसोल्व्ड क्वेश्चन, बट दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह से आपको ट्रांजिशंस इसके अंदर मिलते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2, एटम। एक बार फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एक फोटोन गिरा इसके ऊपर, उसकी एनर्जी थी 12.1। इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसके लिए ये आपका तरीका है, n की वैल्यू निकाल दो, n 3 आते ही वो 3 में पहुंच गया। कितने ट्रांजिशन होंगे ये आप यहां से चेक कर सकते हैं कि इतने ट्रांजिशन होंगे इसके अंदर। कितने ट्रांजिशन होंगे उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला भी है। हाउ मेनी ट्रांजिशन या हाउ मेनी वेवलेंथ विल रेडिएट, उसका एक फॉर्मूला है सीधा सा, n is 3, हम देख सकते हैं यहां से 3, 1, 2 and 3, 3 transitions are there। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका।
ये देखिए अब नंबर 2 एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन इस तरह से है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन incident on electron of ground state. Find number of transitions. सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर, इस बार फोटोन जो गिर रहा है इट इज ऑफ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट का मतलब हमें मालूम है, इसकी एनर्जी है माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई टोटल, ई फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, minus 13.6 plus 12.75 minus 0.84. ये आ गई मेरे पास में टोटल एनर्जी। Again, ET equals to minus 13.6 upon n square. So n square becomes minus 13.6 upon minus 0.85. This is coming out to be 16. N must be equals to 4. So number of transitions, N 4, 6 ट्रांजिशंस विल टेक प्लेस। और वो 6 आप देख सकते हैं, जब 4 से आप आएंगे ग्राउंड स्टेट में तो आपको 6 ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। सो वैसे भी जब 12.1 हुआ तो 3 है, 12.75 है तो 4 है, और ऐसा ही कुछ आएगा नंबर जिससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकें। बिल्कुल पिन पॉइंट स्टेप्स है। टोटल एनर्जी निकालो, एन निकालो, और एन के बाद में आप इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। ऐसा ही देखिए आप अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, nth ऑर्बिट का रेडियस 0.53 इंटू एन स्क्वायर की फॉर्म में दिया जाता है फॉर हाइड्रोजन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड रेडियस ऑफ n equals to 2 and n equals to 3 orbit। ऐसी सिचुएशन में आपको सीधा सीधा 2 अगर लेना है और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो इट इज 2.12 into 10 raised to power minus 10। This result is there in angstrom। angstrom का मतलब होता है 10 raised to power minus 10 मीटर।
सिमिलरली अगर आपको थर्ड ऑर्बिट का देना है, so 0.53 angstrom into 3 square into 9 into 10 raised to power minus 10. This will result you 4.77 into 10 raised to power minus 10. ये रेडियस को निकालने के तरीके हैं अलग अलग। ऐसा ही एक डेटा आप वेलोसिटी के लिए याद रख सकते हैं। जब भी वेलोसिटी होगी इट शुड बी v1/n, जहां पर v1 की वैल्यू आपको गिवन होगी, इट मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड, इट मस्ट बी velocity of 2.18 into 10 raised to power 6. आपको कुछ पूछा जाए, फाइंड वेलोसिटी इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। अब वेलोसिटी के केस में ये बात ध्यान रखनी, वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है, जैसे 2.18, फिर v3 लूंगा अगर मैं तो 2.18, so it should be 1.093, and similarly if I equate it, it is 0.72 10 raised to power 6 meter per second. Velocity का जनरल फॉर्मूला, hope so you remember, 1/137 c z/n. c is velocity of light. Next concept is एनर्जी का, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है -13.6/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां एक छोटी सी चीज मैं क्लियर कर दूं, टोटल एनर्जी इज -12 kZe²/r. Kinetic energy is 12 kZe²/r and potential energy is -kZe²/r. ये तीनों एक्सप्रेशन होते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ n equals to 2 ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ये रही, पहले टोटल एनर्जी निकाल देते हैं, -13.6/2², so it is
1.51. Minus 3.4. ये आ गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जस्ट आप देखेंगे तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स प्लस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर पूछा जाए फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n इक्वल्स टू 3। पहले टोटल एनर्जी निकाल दो। ये आता है माइनस 1.51। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ दिस एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू minus sign will remain as it is, 2 into 1.51 electron volt. Because the relation between energy, kinetic energy and potential energy is this, so you can equate it in this manner. Question number 7 is, second postulate says that the angular momentum must be equals to nh upon 2 pi. अब क्वेश्चन घुमा के दे दिया ऐसे, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो हमारा मेथड कौन सा, एनर्जी वाला, minus 13.6 upon n square. N square becomes minus 13.6 upon 3.4. N square becomes 4. So n must be 2. सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इससे n की वैल्यू। Once you will get the value of n, आप लगा सकते हैं mvr must be 2h upon 2 pi. So your angular momentum must be equals to h upon pi. उन्होंने एनर्जी दी थी और एंगुलर मोमेंटम पूछा था। एनर्जी से हमने n की वैल्यू निकाली और n की वैल्यू को इसके अंदर रख दी। Usually we ignore z, but sometimes it may happen that z will also play its part, that is your atomic number. So if they are asking like this, question number 8, find speed of electron in n equals to 2 of helium. हीलियम के n इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला है 1 अपॉन 137 ×
Z. Z equals to 2 for helium and N is also 2. So the speed becomes C upon 137 meter per second. Exact value is 1.46 into 10 raised to power 6. Meter per second. क्वेश्चन नंबर 9 में जब भी ऑर्बिटल पीरियड आता है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब की पावर चलेगी इसमें। So compare orbital period of n equals to 1 to n equals to 3 अगर पूछा है, 2 equals to पूछा है, तो आप सीधा सीधा T1 upon T2 that becomes N1 upon N2 cube. It should be 1 upon 2 cube, so that is 1 upon 8. So T2 becomes 8 times of T1. ऑर्बिटल पीरियड में हमेशा याद रखना है प्रोपोर्शनल टू n क्यूब चलता है, रेडियस n स्क्वायर एंड वेलोसिटी 1 upon n. Tenth concept is excitation energy. When it comes to ionization energy, it means जहां पर भी वो इलेक्ट्रॉन है वहां से उसको इंफिनिटी पे फेंक दो. एक्साइटेशन का मतलब है किसी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के अंदर आपको इसको भेजना है. So the energy required to excite electron from one particular orbit to other orbit is called basically excitation energy. जैसे हमें एनर्जी की बात कहें अगर, तो एनर्जी इज, यू ऑल नो नाउ, याद हो गया आपको, 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब पूछा जाए ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 1. Second excited state n equals to 3. याद रखिएगा, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो एक्चुअली हमें n की वैल्यू को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा. ये ग्राउंड स्टेट के लिए बताता है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है. n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. इस सिचुएशन में आपने E1 निकाला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर E3 निकाला आपने -13.6 upon 3 square, sorry. So this becomes -13.6 upon 9, which is coming out to be -1.51 electron volt. Now how much energy is required in this process? You can directly say must be equals to E3 minus E1. So -1.51 minus -13.6, it is around 12.09 electron volt. This much energy or excitation energy is required to excite electron from ground state to second excited state. Level wise ध्यान रखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन. तो अपने को अपने आप मालूम पड़ जाएगा, एक पीछे की तरफ चलता है इसमें से.